Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So our topic for today is parts of speech. Now what exactly do you mean by parts of speech? Obviously हम जो भी बातें करते हैं, जो भी हमारी स्पीच होती है, उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं, फाइन. जैसे इफ आई से राम इज गोइंग टू हिज विलेज, तो राम की भी एक इम्पॉर्टेंस है. इज भी एक लाइक इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द सेंटेंस. गोइंग टू भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का. टू द विलेज, द भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और विलेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो सारे वर्ड्स जो एक सेंटेंस में होते हैं वो सारे मिलकर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं. To understand parts of speech better, we will divide them into 8 categories. Rather, they are already divided into 8 categories. Fine. We'll just try to understand each one of them. Fine. Now, parts of speech. If I say if you talk about the spoken English, I will not say that it is a very important part to learn parts of speech. But हाँ, क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग अप दिस टॉपिक. फाइन. बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है या अगर आप लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं तो वहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे या ना ही करना चाहिए. फाइन. जैसे हिंदी में भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, संज्ञा, सर्वनाम, देन क्रिया. क्लियर. तो इनके भी आगे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं. हम हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, हम हिंदी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं और मैं ये सोचूँ ओके मेरे पापा हो गया संज्ञा, बैंक भी हो गया संज्ञा, काम करना हो गया क्रिया, तो मैं सिर्फ इसी उधेड़-बुन में रह जाऊंगी और फिर मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज पे कमांड नहीं रख पाऊंगी. बट एज आई सेड बिफोर, because students who are still in school and college and who are preparing for competitive exam, they have to study all this. So this video is specially dedicated to all those students. Rather, anybody can watch them. Fine. So our parts of speech are divided into 8 categories. So the first part of speech that we take up is noun. Noun हम सबको पता है. Fine. कि noun मतलब नाम. हम बचपन में एक गेम बहुत खेला करते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स. लाइक सपोज उसमें किसी ने बोला लेटर बी, तो हमें कोई नाम सोचना है जो नेम है बी से. सपोज आपका नाम हो गया बलबीर. प्लेस हम हो गया तो प्लेस हो गया मान लीजिए भुवनेश्वर. एनिमल हो गया तो एनिमल में हम बर्ड्स में इंक्लूड कर लेते हैं लाइक बर्ड. फाइन. एंड देन लाइक यू कैन और बेयर, यू कैन से BEAR, बेयर भालू. और थिंग हो गया लाइक बॉटल. सो नेम प्लेस एनिमल थिंग्स. जब हम ये गेम खेलते थे तो हम कोई भी एक लेटर जैसे देते थे, लाइक सपोज वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ 4 और कोई लेटर बोला गया C, तो हमको एक नेम बताना है C से, फिर एक एनिमल बताना है C से, फिर एक प्लेस बतानी है C से, फिर एक थिंग बतानी है C से. एंड ऑब्वियसली ऑल दीज आर योर नाउन्स. तो बेसिकली वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी मुझे लगता है. उस समय हम उसको सिर्फ एक गेम की तरह खेलते थे, बट एक्चुअली वो हमारे इनडायरेक्टली हमारे को बहुत कुछ सिखा रहा था. क्लियर दैट गेम. सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल और थिंग. क्लियर. किसी भी पर्सन का नाम जो है वो नाउन है. फाइन. किसी भी प्लेस का नाम है वो भी नाउन है. लेकिन जैसे हम बोलते हैं ट्रेन या आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा. क्लियर. अब सोफा किसी का नाम नहीं है क्योंकि सोफा बहुत सारे होते हैं दुनिया में. क्लियर. तो बट सोफा को हम क्या कहते हैं? इट्स अ कॉमन नाउन. ही इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. सो ट्रेन इज अ कॉमन नाउन. क्लियर. तो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ नाउन्स लाइक नाम हो गया. देन वी हैव कॉमन नाउन्स लाइक ट्रेन, हॉस्पिटल, रोड. देन यू कैन से माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स. अब रिवर्स बहुत सारी हैं दुनिया में, लेक्स बहुत सारी हैं, माउंटेन्स बहुत सारे हैं, ट्रेन्स बहुत सारी हैं. क्लियर. तो ये सब क्या हो गए? हमारे कॉमन नाउन्स हो गए. देन वी इवन हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे क्या होते हैं? वो नाउन्स आप सिंपली कह सकते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, विच आर नॉट टैंजिबल, इनटैंजिबल. लाइक यू कैन से ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज. अब नॉलेज यानी ज्ञान. ज्ञान को आप छू नहीं सकते हैं. क्लियर. लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान भी एक संज्ञा है, ज्ञान भी एक नाउन है. लाइक वी से ही इज अप्रिशिएटेड फॉर हिज ऑनेस्टी. वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए उसकी तारीफ होती है. तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, दैट ऑल्सो बिकम्स अ नाउन. फाइन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. देन वी हैव प्रोनाउन. नाउ pronoun is a word used in place of a noun.
Suppose I say Chandan lives in Mahipalpur, Chandan works in a bank, Chandan comes to my house every day, Chandan does not smoke cigarette, Chandan is preparing for competitive exams. So the sentence becomes very boring, right? Like सामने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा मेरी बात ज़्यादा सुनने में, और मुझे भी थोड़ा सा बहुत रेपिटेटिव लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को रिपीट करके जा रही हूँ. So instead of Chandan, what I can say, I can simply say like Chandan lives near my house. He goes to the railway station in the morning. He is preparing for competitive exams. क्योंकि हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता लग गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम चंदन के बारे में बात करें. तो आगे जितने भी हमारे सेंटेंसेस फॉलो हो रहे हैं वो हमारे चंदन के बारे में फॉलो हो रहे हैं. तो वहाँ पर हम चंदन की जगह सिंपली ही लगा देंगे. Then we have different kind of pronouns, like we say personal pronouns. Now what are personal pronouns? Personal pronouns होते हैं आपके like you say I, me, mine. Clear? You, yours, your. Clear? He, his, him. She, hers, like you can say she, his, hers. Fine. Then sorry, she, her, hers. Sorry. Then we say they, theirs. क्लियर? तो ये सब हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउंस. फाइन. ये मेरी बुक है, दिस बुक इज माइन. ये तुम्हारी बुक है, दिस इज योर बुक. दिस इज हिज लैपटॉप. क्लियर? दिस इज देयर हाउस. सो ऑल दीज आर नोन एज योर पर्सनल प्रोनाउंस. Then you have your demonstrative pronouns. Now what exactly do you mean by demonstrative pronoun? Demonstrative मतलब obviously हम कुछ demonstrate कर रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं. Like you can say this house which is behind the temple is supposed to be haunted. So this house, हम कुछ demonstrate कर रहे हैं कि this house, that boy who's standing behind the door is very naughty. So this, that, these, those. Fine. Like these books are very helpful for your competitive exams. Those boys are playing for the school football team. Clear? So this, that, these, those, they all are your demonstrative pronouns. Fine. Then you have your interrogative pronouns. What are interrogative pronouns? Interrogative obviously means कि हम question की बात कर रहे हैं. Like आपका who, what, which, whose. All these are your interrogative programs. Like who is standing at the door? Fine. Which of these books is yours? Fine. Whose shirt are you wearing? आपने किसकी शर्ट पहनी हुई है? इनमें से कौन सी किताब आपके मतलब की है? Which of these books is of your importance? Or which of these books is important for you? Okay. Then we have your reflexive pronouns. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे हम कई बार बात करते हैं कि मैं अपना काम अपने आप करती हूँ. I do my work myself. You should do it yourself. He always goes to the job himself. Fine. Yeah, he always go to the school himself. They travel all by themselves. So I के साथ जो हम लगाते हैं myself, you के साथ जो हम लगाते हैं yourself, we के साथ हम लगाते हैं ourselves, they के साथ हम लगाते हैं like themselves. Clear? So all these are your like myself, yourself, themselves. Clear? They all are your reflexive pronouns. Okay. Then we have your relative pronouns. Now what are relative pronouns? Like whom, what, which. What are you talking about? Or you can say, what book is he carrying? Which of these t-shirts is not Ram's? Clear? तो इनमें से कौन सी t-shirt राम की नहीं है? Whom are you? You can say, whom are you looking for? या who are you looking for? Fine. Whom do you want to see? आप किससे मिलना चाहते हैं? तो whom do you want to see? Fine. Okay. Next we come to adjective. Now adjective. It's a very, like loved part of speech by everyone, by all the authors, by all the poets. Fine. So adjective क्या होता है? Adjective वो word होता है आपका जो obviously आपके noun या pronoun की कोई quality बता रहा है. Like you can say, my mother is very patient. Fine. मेरी मम्मी में बहुत ज़्यादा सब्र है, वो बहुत ज़्यादा patience रखती हैं, तो she is very patient. Fine. या धैर्यवान है जैसे हम कहते हैं हिंदी में. My father is very strict. तो strict जो word हो गया आपका, that is an adjective. किसी भी चीज़ की हम जो विशेषता बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इंसान की विशेषता बताएं. This room is very airy. Fine.
ये रूम बहुत हवादार है, दिस रूम इज क्वाइट स्टफी, फाइन, मतलब बहुत स्टफी है, बड़ी घुटन हो रही है यहाँ पर, क्लियर? सो एनीथिंग, any word which is describing your noun or your pronoun becomes your adjective. Like for example, you have, I can just read out like adjective. It tells about your opinion. Like you can say, oh, how do you find her? Oh, she's very beautiful. Fine, she's very talented. She's very intelligent. Fine. तो जब भी हम अपना opinion express कर रहे हैं या opinion दे रहे हैं, that word, with whatever word expresses our opinion, fine. So that actually is your adjective. Like you can say she's very intelligent. She's very sincere. She's very loyal. Clear? So all these words are your adjectives. Then we come to size. Like this building is quite tall, fine. Oh, this book is quite thick, fine. This ball is, like quite heavy, clear? तो हम यहाँ पर एक size की बात कर रहे हैं. Thin हो गया, fat हो गया, thick हो गया, thin हो गया, clear? All these words are your, again, adjectives. Okay. So the next we can talk about like the physical quality, like you say, he's very stout, he's very strong, she's very lean and thin. Fine, so they all fall under the category of adjectives. Then shape, it's round, it's spherical, it's square, fine, it's triangular, it's conical. So any word which describes the shape of any object, fine, or any person also. She has a round face, she has a long face, clear? So all these words are also your adjectives. Color, the orange cap, fine, the white coat, clear? The brown cookies, clear? Origin, like I'm an Indian, she is a Chinese, they are Americans. So the place from where you belong, that becomes your origin. So all these are also your adjectives. Then material type, like it is a cotton sari, fine. It is a paper material. This is a plastic box. It is a steel container. Okay? So all these words again are describing the quality of certain things. So they all are adjectives. So the next is your verb. Now what are verbs? Verb again, it's a very important part of your like speech. Verb मतलब क्रिया. क्लियर? हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम उसमें क्रिया नहीं लगाते हैं. क्लियर? Like as I told you, the first example I gave you, like Ram is going to his village. तो राम, ठीक है, राम कुछ काम कर रहा है. क्लियर? राम कहाँ जा रहा है? राम विलेज जा रहा है. लेकिन राम और विलेज के बीच में एक्शन क्या हो रहा है? राम इज गोइंग टू हिज विलेज. शी eats rice every day. She rice every day makes no sentence and makes no sense, sorry. Fine. तो she eats rice. वो rice का क्या करती है भाई? वो rice को खाती है. Clear? He travels by metro every day. He metro every day makes no sense. Clear? He travels by metro every day. So ये travel आपका जो verb हो गया, ये जो आपका eat हो गया, ये जो आपका going to या goes हो गया, ये सारे आपके verbs हो गए. ये आपका action words हो गए. ये हमारा define कर रहे हैं कि हमने क्या action किया है या हम क्या एक्शन करेंगे या हमने क्या एक्शन करते हैं रोज. Verbs again, they keep changing their forms according to the tenses. अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. मैं पास्ट टेंस में बात करती हूँ तो मेरा प्रेजेंट वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म आता है. इवन इन परफेक्ट टेंसेस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. लाइक यू कैन से आई ईट राइस एवरी डे. मैं राइस रोज खाती हूँ. आई एम गोइंग टू ईट राइस टुडे. मैं आज राइस खाने वाली हूँ या आज राइस खाऊंगी. क्लियर? आई विल मीट हिम टुमारो. मैं उससे कल मिलूंगा. आई मेट हिम यस्टरडे. मैं उससे कल मिला था. फाइन. आई हैव ऑलरेडी मेट हिम. उससे ऑलरेडी मिल चुका हूँ. अब मीट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी आपका मेट होता है. क्लियर? Now we even have your auxiliary verbs or what we even call as the helping verbs. Auxiliary verbs क्या होते हैं आपके? जो दूसरे verbs का
लाइक मूड चेंज करते हैं, या उनका टेंस चेंज कर देते हैं, या उनकी जो वॉइस चेंज कर देते हैं, वॉइस मतलब एक्टिव या पैसिव वॉइस में उनको बदल देते हैं. लाइक यू कैन से शी इज गोइंग टू द डॉक्टर. फाइन. तो इज जो हमारा यहाँ पर है दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब. फाइन. इज नॉट द मेन वर्ब. मेन वर्ब हमारा हो गया गोइंग टू. क्लियर? या गोइंग. यू कैन से ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. वो दीवार के पीछे खड़ा है. तो स्टैंडिंग इज द मेन वर्ब एंड इज बिकम्स योर हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? Okay. And a very common auxiliary verbs are your be, have, to. Like I have to be present in the class tomorrow. Fine. I have to I have to submit my project by next week. Clear? Okay. Then you even have your modal auxiliary verbs. Now, what are modal auxiliary verbs? Modal auxiliary verbs are even known as modals. Fine, very commonly used and they are pain for many. I know बहुत लोगों को मुश्किल भी लगते हैं. इसका मैं एक अलग से बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ only on modals. Clear? Where I'll be taking all the modal verbs together. So modal verbs आपके क्या होते हैं? Like may, might, can, could, will, would, should. Clear? Ought to, must. So all these are your modal verbs. तो modal verbs हमारे क्या होते हैं? जो basically हमारा probability दिखाते हैं कोई काम होने की, या हम कब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ये उन सब जगहों पर यूज होते हैं. तो I very soon or maybe next or next to next video of mine will be on modal verbs only. So please stay tuned and keep watching. Fine. Okay. So now we have your next is adverbs. Adverbs. Adverbs पर मैंने already 2-3 shorts भी बनाए हैं पहले. You can check them there, and where I've explained it very briefly, but I think it's the whatever I explained वो बहुत clearly मैंने explain किया है, so there should be no problem. So adverbs. Adverbs मतलब होता है हम कुछ additional information दे रहे हैं, हम कुछ additional बता रहे हैं. Clear? और mostly additional information होती है about verbs. Clear? Like you can say he is running. Running is your verb. He is running very fast. Now very fast becomes your adverb. Clear? She lives in Delhi. तो वो दिल्ली में रहती है. She lives very close to my house. Clear? अब उसका जो वो है रिलेशन जो मेरे घर से है वो कितना दूर पे है या कितना पास पे है, तो वेरी क्लोज बिकम्स योर एडवर्ब. एडवर्ब के भी आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर. फाइन. एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपका हो जाता है लाइक यू कैन से क्लोज टू, वेरी फार, बिहाइंड, opposite. Fine. Adverb of time में आपका हो जाता है she gets up quite early in the morning, so quite early becomes your adverb of time. Then you can say he comes very late at night, so very late becomes the adverb of time. Then adverb of manner. Adverb of manner becomes कि हम कोई एक्शन कर रहे हैं वो क्या मैनरिज्म है या किस तरह से हम उस एक्शन को कर रहे हैं. He does his job very sincerely. So very sincerely becomes your adverb. Clear? He always makes hasty decisions. वो हमेशा hasty decisions लेता है. So hasty becomes your adverb. Clear? So adverb is anything which is adding something more to your verb, or sometimes even your adjectives as well. Okay? Okay. Now the next part of speech that we are going to take up is your preposition. Preposition, again a very important part of speech. I'm again very soon coming up with a separate video on prepositions. Prepositions क्या होते हैं? जो हमारे कोई भी दो चीज़ों का आपस में relation बताते हैं. Clear? जैसे if I say the book is kept on the table. Fine. So book और table का आपस में क्या relation है कि book table के ऊपर है. The cat is sitting under the chair. Cat और chair का आपस में क्या relation है कि cat table के नीचे है. Clear? The fan is above my head. Fine. मेरा और fan का क्या relation है? The fan is above my head. So all these words which
like indicate your relationship, fine, between two objects, between two people, clear? So they are your prepositions. Some very commonly used prepositions are to, to, for, of, clear? Then by, below, under, above, opposite, then far away, close to. So all these are your prepositions, fine. I'm very soon coming up with a separate video on prepositions because I know they are a very important part of your day-to-day language also. So I'll be very soon coming up with that video, so please stay tuned. So the next one is your conjunctions. Now, what do you mean by conjunctions? I'm sure जितने भी school going children हैं, college में जो students हैं, and all the students who are preparing for competitive exams, उनको पता ही है conjunctions क्या होता है. Conjunctions वो words होते हैं जो हमारे कोई भी दो clauses को, दो words को, दो sentences को join कर रहे हैं. Those words are known as your conjunctions. Clear? Like you can say, a very common example, like you can say, is like fanboy. Fine, fanboy is like F से हो गया आपका for, A से आपका हो गया and, N से आपका हो गया nor, B से आपका हो गया but, O से आपका हो गया और, Y से आपका हो गया yet. So ये सारे sentence words जो हैं ये आपके conjunctions हैं. Like you can say I am not well, I will be going to the school. I am not well, but I will be going to school. मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन मैं स्कूल जाऊँगी. Clear? He is sick. He is running very high temperature. He's sick and he is running very high temperature. So we can join the two sentences using the word and, which is a conjunction. The last one is your articles. आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स को हम दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, लाइक डेफिनेट आर्टिकल्स एंड योर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में मुझे भी ऑलरेडी पता है कि क्या बात हो रही है एंड यू ऑल्सो आर अवेयर कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. ओह, गिव मी दैट बुक. Clear? So even you know कि मैं किस book के बारे में बात कर रही हूँ. If I simply say give me a book, so that is a random thing कि आप मुझे कोई भी एक book दे दीजिए, but no, here I'm talking about a particular book. So the is your definite article, and your indefinite articles are a and an. A and an are used for anything in singular, fine, and anything which is not definite. Like you can say, just give me a paper to write down something. तो आप बोल रहे हैं कोई भी एक पेपर दे दो. क्लियर? मैं कोई पर्टिकुलर पेपर की नहीं बात करूँ, बट इफ आई वांट टू से गिव मी द पिंक पेपर, सो मे बी देयर इज अ पिंक पेपर लाइंग ऑन द टेबल जिसके बारे में आपको भी पता है, मैं भी जानती हूँ. सो देन आई वुड से गिव मी द पिंक पेपर. इफ आई एम आस्किंग फॉर एनीथिंग लाइक मुझे एक पेन देना, गिव मी अ पेन. क्लियर? सो देन आई विल यूज अ. एंड हमारा कहाँ यूज होता है? लाइक इंग्लिश में हमारे जो 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. So any word starting with the vowel and if it's in a singular form, so उससे पहले हम and लगाते हैं. She was carrying an umbrella. उसने छाता लिया हुआ था. Fine. I'm going to eat an apple. मैं एक एप्पल खा रही हूँ या खाने जा रही हूँ. क्लियर? तो मैं एक पर्टिकुलर एप्पल नहीं खाने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू ईट दी एप्पल नहीं हो सकता. हाँ, द एप्पल भी हो सकता है कि हो सकता है आपने पहले खाया हो, आपने थोड़ी देर रख दिया हो, देन यू वांट टू से ओह आई विल फिनिश द एप्पल. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एप्पल. क्लियर? सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो जाते हैं आपके ए एंड डेफिनेट आर्टिकल आपका हो जाता है द. So that's all for today in our topic parts of speech. See you in another video, and as I keep saying, keep listening to more and more of English, keep following my videos, keep sharing them as well with your friends, relatives, neighbors, clear? And do like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye, see you then.